Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So I'm back with a video which I have totally made for you all. आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे कि दीदी क्वेश्चन बताओ. जबकि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में मेंशन किया है कि मुझसे क्या पूछा गया था, बट स्टिल यू आर लाइक कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे. सो आई जस्ट मेड अ नोट ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझसे एंड मेरे आसपास के लोगों से पूछे गए थे. एंड यस, ये क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं. एंड दीज आर द क्वेश्चंस, लाइक मैंने और भी लोगों से पूछा, दे आर आल्सो लाइक कि these are the questions that are being repeated and these are the things only that are being asked from the people. क्योंकि as I mentioned कि मेरा इंटरव्यू दो दिन था. फर्स्ट डे मेरा 3 राउंड हुआ था एंड सेकेंड डे वॉज द लास्ट फोर्थ राउंड. सो मैंने वेंट फॉर द फोर्थ राउंड ऑल्सो. मैंने कुछ लोगों का जीडी सुना था और देखा भी था while they were giving their जीडी. सो उसमें भी यही सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे. तो इट वाज नथिंग, इट वाज नॉट लाइक दैट कि आपसे कुछ और पूछा जा रहा है और वो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाए. नहीं, इट्स लाइक कि वही 10, 15, 20 क्वेश्चन जो है, दैट क्वेश्चंस आर ओनली बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, somehow it's going to help you. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन पहले से पता है, if you are familiar with the question, so you can prepare it, you can give a like you can prepare it with a demo कि हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया on the spot, भले आपके पास कंप्लीट आंसर रटा हुआ नहीं है, बट एटलीस्ट आप कुछ तो सोच के गए हो घर से, राइट? So okay, so these are the questions that I'm gonna tell you. I'm not going to answer the questions. It's just कि आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगी and the answer, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि यार try to frame the answers yourself. Don't mug up the answers. दूसरों के answers मत लिखो, गूगल के आंसर मत लिखो. If you have to take a help, आप दूसरों के आंसर थोड़े सुन लो, उसमें आप एड ऑन कर सकते हो, अपने आंसर्स में आप उसको एड ऑन कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट डोंट मग इट अप ऑल and try to be authentic. Keep your real answers. Okay, no need to like no need to mug up दूसरे का आंसर और गूगल का आंसर. Please don't do that and don't go to ChatGPT. Please, just please. Okay, so let's get started. मैंने notes बना लिए हैं, ठीक है? I have just got 10 questions for you and I'm just gonna tell you that. So let's get started. Now the first question is introduce yourself. मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था that this is very important. And ये तो आना ही है यार, ये तो सबके साथ आनी है. Once you'll get this question that introduce yourself or tell me something about you or tell me something that you have not mentioned in your resume. You can be asked anything. ये घुमा फिरा के कैसे भी आपसे पूछा जाएगा, but the question is same, that you have to introduce yourself to the HR. Now the next question is, why do you want to become a cabin crew? Again, same, like simple one. Why do you want to become a cabin crew? You need to be prepared with your answer कि आपको क्यों बनना है, right? Next is, why should we hire you? Yeah. Why Indigo? Why not any other airline? Yeah, ये questions वो बहुत लोगों से पूछते हैं. मैंने देखा था कि they were asking कि why do you want to become a cabin crew at Indigo? क्यों किसी और एयरलाइन को क्यों नहीं ज्वाइन करो? तो yes, कहीं ना कहीं आपको इंडिगो की थोड़ी तारीफ करनी होगी और बताना होगा why you want to join Indigo. यहाँ पे आप आंसर्स थोड़ा देख सकते हो, दूसरों की हेल्प ले सकते हो. Fifth is, which is your favorite season and why? And मैंने mention किया था, this question was asked from me in my GD group discussion कि which is your favorite season and why. Sixth is, share one of your favorite memory. Okay, so आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप अपनी कोई अच्छी फेवरेट मेमोरी बताइए, आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो फेवरेट हो, right? That can be asked. Even they can also ask you about the challenges that you have faced, any of the challenge that you have faced in your life. और अभी recently मुझे एक और question पता चला है कि जिसमें they ask you that, tell me a moment, tell me a thing that changed your life completely. So they can ask you such questions also. यार कभी कभी तो seriously लगता है कि यार ये Miss Universe का competition चल रहा है कि क्या चल रहा है? How they ask you questions like that. But yeah, this is how it is. Because somewhere they're checking your communication, nothing else. उनको check करना क्या है? उनको आपका communication check करना है. And they also see the ability that how you are going to attend that question, how you are going to like explain your answers like properly. आप कैसे अपने जो अंदर,
क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग द आंसर, द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, many of us don't know what they're going to ask. So we are just preparing the answer on the spot, so they just want to see that how you take out that answer in your words, like how you put that answer correctly, quickly in your words then and there. So they're just going to check that. They're going to check your communication and they're going to check your confidence. So that's why they ask you twisted questions anyway. Next is, if not cabin crew, what will you, like what will be your plan B? अगर आप cabin crew नहीं बने तो फिर आप क्या करोगे? This is also like, ये भी मेरे आसपास में एक दो लोगों से पूछा गया था, you know, what if you are not selected today, what is your plan B? Like one of my friend was asked this and she did not get selected. And I'm like, यार मुझे बहुत बुरा लगा था when she did not get selected, but yeah, luckily she'll get selected this time. I'm hoping for it. Yeah. So next is, how did you celebrate your last birthday? ये चीजें पता है, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप घर में ना अपने से सोच लेना, ठीक है? इवन इफ यू डोंट राइट द क्वेश्चन एंड डोंट राइट द आंसर्स, बट यू थिंक ऑल दीज क्वेश्चंस, लाइक आप एक बार सोच लेना कि हाँ यार मैंने कैसे बना दी, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट ना आपको चीजें अच्छे से याद भी नहीं आती, आप बस बोल रहे इट वाज अ नॉर्मल बर्थडे, आई जस्ट कट द केक एंड विद माय फ्रेंड्स आई जस्ट had a dinner party, that's it. No, you can't give the answer so shortly. You have to explain your birthday. तो आप थोड़ा बना भी रहे हो ना, तो पहले थोड़ा सोच के प्रॉपर जाना कि भाई अगर बर्थडे का पूछ लिया, अगर फैमिली मेंबर का किसी का पूछ दिया रूटीन, how you are going to answer that, because you know now they are asking family members routine also. मेरे से पूछा गया था that tell me your sister's routine, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा था अपनी बहन का पूरा रूटीन. So yes, you can, they'll ask you anything. वो आपसे कुछ भी पूछ देंगे. Why should we hire you? ये सब पूछे चाहे ना पूछे, such questions they're going to ask you anyhow. Next is, tell me about your last trip. So yeah, if you have any last trip or something, और तो उसके बारे में भी आप सोच लेना कि आप कहाँ गए थे, क्या किया था. And see, if your communication is good, you can give the answers on the spot. But as many of you say that our communication is not good, and how should we prepare? So these questions you should prepare beforehand. Right? This is very important. Now the last one is, who is your role model and why? This was asked from me that, you know, tell me, Anshul, who is your role model and why is that person your role model? तो यार मैं इसका आंसर दे देती हूँ, ठीक है? मुझसे पूछा गया था कि who is your role model and why. So I just said that, ma'am, I don't have a role model, but when I was young, and so my sister, like my eldest sister, she topped in her 12th examinations. She topped this. She was a district topper. So like her photos were printed in the newspaper, and every day, reporters used to come to our place to take her interview, to ask her about what she wanted to do in her future and what she wants to become. So that thing admired me a lot, and you know, that moment I thought that someday I'll also get my pictures printed on the newspaper. But lately I realized that I am not a great student and I can't do that thing. तो या ऐसे करके मैंने अपना आंसर फ्रेम किया था, बट दैट वाज अ गुड आंसर व्हिच आई गेव ऑन द स्पॉट. मुझसे ये पूछा गया था, और यार मेरा रोल मॉडल नहीं है, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है. I really admire people, but I don't make anyone my role model, because you know I want myself to be authentic. I want myself to be someone who is very different. तो मतलब मैं ऐसे रोल मॉडल नहीं बना रही हूँ किसी को. So yeah, this was it. And yeah, these were the questions. और जैसा कि मैंने बोला कि आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर का रूटीन लर्न कर लेना है. लर्न क्या करना है, आपको बस दिमाग में रखना है कि दे कैन आस्क यू either your father's routine, mother's routine, your sister's routine, your brother's routine, your grandfather's routine, anyone they can pick up and they can talk about it and they can ask about it. So you should be mentally prepared कि हाँ किसी का भी रूटीन पूछा जा सकता है. तो आपका रूटीन खुद का पूछा जा सकता है, that what do you do in, like what do you do usually when after waking up to you again sleep, what do you do whole day? Tell me your whole day routine. So they can ask you such questions. Or else what they can do is they can just tell you to they just tell you कि, you know, describe your last week, describe your last day, what did you do last day.
how did you spend this last week? So they can ask you any such questions. So you just have to be mentally prepared. आपको mentally prepare होना पड़ेगा. ये चीजें आप थोड़ा कर लेना, थोड़ा प्रिपेयर कर लेना खुद को. कुछ पॉइंट्स हो तो जॉट डाउन कर लो, कुछ चीज़ें हो तो उसको अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लो कि हाँ भाई अगर ये पूछ दिया जाए तो आपको क्या बोलना है. इट शुड बी इन योर हेड, राइट? एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट, बी कॉन्फिडेंट and be bold, smile all the time, and give the answers. Smile, give the answers, show some confidence, and yeah, you're good to go. All the best. Bye.